Hello everyone. This is lecture 3 of my free paper 1 course. So if you haven't yet watched my lecture 1 and lecture 2, then you must start in a sequence. You can watch lectures 1 and 2 from the link that is provided in the description box of this video. Okay, in this video lecture, we will cover the topic phases of teaching plus other important terms from Unit 1 of UGC NET Paper 1 syllabus. Further, I will also inform you about my free paper 1 course in this video, which I am providing along with my book, plus where you will get free structured PDF notes of paper 1. So do watch this video till the end. Now, all those who have bought this book, that is NT-UGC NET JRF updated edition, third edition, right? So along with this book, I have provided you online resources, these chapters. Chapter 1, an introduction to teaching. In this, you can watch my lecture 1 on YouTube, and you can also prepare this content from the free PDF that is provided with this book. In that PDF, you must prepare objectives of teaching, characteristics of teaching, basic requirements of teaching, and attempt the practice questions also, and prepare their detailed explanations also. Then you can watch my lecture 2, that is levels of teaching, from YouTube, and I have provided free PDF also related to levels of teaching. Everything, full complete notes have been provided in this PDF. This PDF is termed as chapter 1.1 levels of teaching. Again, in this PDF there are practice questions along with the detailed explanations, so you must prepare each and everything very nicely. Now, another online PDF which I'm going to provide you is chapter 1.2 related to teaching, which I'm going to discuss in this lecture 3. So watch and listen to this video lecture very carefully, prepare the PDF, and all the best for your preparation. Now, in this lecture, we are going to focus upon the topic that is phases of teaching, right? This can also be called as stages of teaching. ये बहुत important topic and it's a very easy topic. You must prepare it nicely listening to this video lecture. This phases of teaching or stages of teaching, you must know the name of the person who has given it, Philip W. Jackson. He has proposed 3 main phases of teaching. You should know the names, stages of teaching in a sequence. Pre-active phase. So the first stage is pre-active phase, that is planning phase, right? Second stage जो है इसका नेम क्या है, interactive phase, that is implementation phase, and third stage is post active phase, also termed as evaluation phase. Now further we will discuss these 3 phases or stages step by step, and I will also provide you free PDF notes of all these phases of teaching along with my book. So you need not to worry, whatever I am discussing in this video lecture आपको उसका complete जो है free PDF मिलेगा along with my book. So don't worry at all. You can prepare, go through that PDF again and again, and prepare entire syllabus of paper 1 with me. Fine. So the first stage, name, you should focus upon the name. Pre-active phase, right? Planning phase. So this is the preparatory stage जहाँ पे teacher ने prepare करना है. Here teachers will plan and design their teaching activities before actual classroom interaction. Means classroom में जाने से पहले teachers ने प्लान करना है, व्हाट दे हैव टू डू इन द क्लास. उनको सारा कुछ डिजाइन करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा क्लासरूम में जाने से पहले. ठीक है. सो देयर आर सेवरल एक्टिविटीज रिलेटेड टू दिस फेज और स्टेज ऑफ टीचिंग. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव सेटिंग. ठीक है. स्टूडेंट्स को क्या हमने पढ़ाना है, व्हाट शुड बी taught to the students in the class. ठीक है. What are the learning objectives of the lesson? This has to be decided by the teacher. Then next जो एक और activity, that is content selection. Deciding on the subject matter to be covered during the lesson. Teacher has to decide upon, plan उसे करना पड़ेगा कि मैंने इस lesson में कौन सा subject matter जो है, meaning कौन सा मैंने content जो है वो cover up करना है इस lecture में. Right? And then she or he has to decide upon the method. कौन सी appropriate teaching strategy या methods जो हैं he or she should adopt to make that lesson. ठीक है. To teach to their students. For example, it can be a lecture, it can be a discussion. ठीक है. Through discussion मैं उन्हें पढ़ाऊँ, कैसे मैं उनको teach करवाऊँ, जो भी मैंने lecture उन्हें पढ़ाना है. ठीक है. This is the point over here. Then lesson planning.
टीचर को पहले ही क्लासरूम में एंटर करने से पहले स्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपना लेसन, ठीक है, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है मैं टेकअप करूं सो दैट दे शुड अलाइन विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. सो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ प्री एक्टिव फेज. मीन्स प्री, पहले, उसने पहले प्लान करनी है टीचर ने सारी की सारी एक्टिविटीज बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम, ठीक है. जो सेकेंड स्टेज है दैट इज इंटरैक्टिव फेज, ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन फेज. अब यहाँ पे वर्डिंग से इटसेल्फ क्लियर है. So this is the actual implementation of the lesson. Pre-active phase में जो भी टीचर ने डिसाइड किया कि मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट आई हैव टू टीच देम, व्हाट विल बी द मेथड्स, अब जो है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आ गया इस स्टेज में. इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंटरैक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स. अब उसे डायरेक्टली इंटरैक्ट करना है टीचर को स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है. सो यहाँ पे जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, यू शुड नो. Presentation of content. Herein, the teacher has to deliver the lesson content through lectures, discussions, whatever she or he decided upon in the pre-active phase. In that stage, he or she has to deliver that lesson content in this stage, because this is what implementation phase, right? So herein, in this stage or phase, student interaction is very much important. The teacher has to engage the students in the learning process, ठीक है, through questions, discussions and active participation of their students. Then in this stage only the teacher has to manage the student behavior also, ताकि वो डिसिप्लिन में रहें. एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए ड्यूरिंग दैट लर्निंग प्रोसेस. ये सारी एक्टिविटीज जो हैं दे आर रिलेटेड टू दिस फेज. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज क्लासरूम मैनेजमेंट. इसे हम क्लासरूम मैनेजमेंट बोलते हैं. व्हेन द टीचर इज मैनेजिंग द स्टूडेंट बिहेवियर, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास एंड क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट व्हिच इज कंड्यूसिव टू लर्निंग. व्हाट इज दिस? दिस इज क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है. सो ये सारी एक्टिविटीज जो है ये इम्प्लीमेंटेशन फेज में कवर अप होंगी, राइट. द नेक्स्ट जो है लास्ट फेज दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट एक्टिव फेज और इवैल्यूएशन फेज. सो दिस इज द रिफ्लेक्टिव स्टेज दैट अकर्स आफ्टर द लेसन हैज बीन टॉट. अब यहाँ पे टीचर ने अपना जो काम है खत्म कर दिया है, लेसन उन्होंने पढ़ा दिया है. सो यहाँ पे हम इवैल्यूएट करेंगे द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग प्रोसेस, ठीक है. हाउ दैट कैन बी डन. असेसिंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ठीक है. हम स्टूडेंट्स को हम इवैल्यूएट करेंगे थ्रू सम टेस्ट, या हम उन्हें असाइनमेंट्स दे सकते हैं, या समेटिव असेसमेंट के थ्रू वी विल इवैल्यूएट देयर लर्निंग कि उन्होंने क्या सीखा, उनकी टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसी आई, दैट विल लेट अस नो. देन रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग मीन्स जो स्टूडेंट से हम फीडबैक ले सकते हैं कि उन्हें टीचिंग कैसी लगी, ठीक है. बेस्ड ऑन देयर इवैल्यूएशन, बेस्ड ऑन देयर फीडबैक, टीचर्स कैन ऑल्सो एडजस्ट देयर फ्यूचर लेसन प्लान्स. दे कैन ऑल्सो मॉडिफाई देयर टीचिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है. सो in this stage in evaluation phase the teachers should address any gaps. कहीं कोई गैप है अगर स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग में, टीचर शुड ट्राई टू फिल दोज गैप्स इन द फ्यूचर, ठीक है. सो ऑल दिस टेक्स प्लेस इन द इवैल्यूएशन फेज. सो यू शुड नो ऑल दीज phases of teaching along with the different activities, because UGC NET question is out of the following which is not an activity related to pre-active phase, out of the following which is not an activity related to interactive phase, and who has given these phases of teaching, that is Philip William Jackson. He has given the phases of teaching, ठीक है. आपने कोई टेंशन ही नहीं है because I am already providing you all this content which I have discussed over here in this video lecture. I am providing you all the detailed content as free PDF notes along with my book, so don't worry at all. Now the next very important topic related to teaching is modalities of teaching. इसके ऊपर भी क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं इन यूजीसी नेट एग्जाम एंड सेट एग्जाम. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मोडालिटीज ऑफ टीचिंग. सो टीचिंग इट हैज़ गॉट वेरियस फॉर्म्स और मोडालिटीज. हर मोडालिटी का, हर फॉर्म का जो ऑब्जेक्टिव है, जो अप्रोच है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है. देयर आर 4 मोडालिटीज ऑफ टीचिंग. यू शुड नो दीज टर्म्स. फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शन, second is training, third is conditioning and fourth is indoctrination. So ये जो modalities हैं they are placed on a continuum. एक कॉन्टिन्यूम में एक स्केल है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी. एक लर्नर जो है वो कितना अपनी तरफ से याद करना चाहता है, प्रिपेयर करना चाहता है, वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है. and the focus on either critical thinking or rote learning, ठीक है. on one end of that scale instruction lies and on the other end indoctrination lies.
In between क्या आता है? Training and conditioning. So we will discuss these 4 terms in more elaborative form so that you prepare it from UGC NET set examination perspective. Now we will understand the first form, or you can say modality of teaching. First is instruction. So let's understand this one. अब instruction क्या है? This is a traditional mode of teaching. You remember when teachers they systematically impart knowledge or skills, ठीक है? जब teacher एक lecture के through structured lessons के through सिर्फ knowledge impart कर रहा है to the students, what is this? This is instruction. It is a teacher-centered approach where the focus is on conveying information clearly. यहाँ पे फोकस क्या रहता है इंस्ट्रक्शन मेथड में, इंस्ट्रक्शन फॉर्म ऑफ टीचिंग में, कि टीचर ने इंस्ट्रक्शन देनी है, इम्पार्ट करनी है नॉलेज और स्किल टू द स्टूडेंट्स थ्रू लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशंस और स्ट्रक्चर्ड लेसन्स. ठीक है, that's why it's written over here, teaching that involves structured delivery of information. Structured way में अगर हम deliver कर रहे हैं information to the students, that is instruction. Focusing on both content understanding. As a teacher we want that जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कंटेंट को अच्छे से समझ लें, एंड क्रिटिकल थिंकिंग दे शुड एनालाइज द कंटेंट, राइट. सो यहाँ पे जो फोकस है it is on knowledge transfer. Knowledge impart करनी है, knowledge transfer करनी है from the teacher to the student. ठीक है. Then encourages critical thinking and exploration. ताकि जो students हैं they should be encouraged to think critically and exploration. Exploration means they should find out ways, discover, एग्जामिन करें वो कंटेंट को जो भी उन्हें डिलीवर किया जा रहा है, राइट. सो इन दिस मेथड और मोडालिटी ऑफ टीचिंग जो लर्नर ऑटोनॉमी है दैट इज मॉडरेट. ये आपने याद रखना है, दैट इज मॉडरेट. ठीक है, स्टूडेंट्स आर जनरली दे आर डिपेंडेंट ऑन द टीचर बट दे आर इनकरेज टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द कंटेंट. क्रिटिकली मीन्स अगेन आई रिपीट, एनालाइज करें वो कंटेंट को जो भी उन्हें पढ़ाया जा रहा है क्लासरूम में. ठीक है, सो हेयर एंड स्टूडेंट्स जो हैं दे आर एंगेज्ड, they ask questions and they explore new ideas. And what is the teacher's role over here? Instructor provides knowledge and facilitates discussion. For example, related to this example is when the teacher explains mathematical concepts to the students in a classroom. कोई मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है, कुछ एल्जेब्रा के बारे में टीचर ने स्टूडेंट्स को समझाया, तो टीचर जो है स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रहा है हाउ दे कैन सॉल्व नाउ एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स and they can get involved in discussions. When I'm saying all this, what is this? This is instruction. ठीक है, तो आपने इस टर्म को अच्छे से प्रिपेयर करना है. What is instruction? You should understand these terms. Then you will be able to attempt multiple choice questions based upon these 4 terms. Now the next form of teaching is training. ट्रेनिंग वर्ड के ऊपर आपने फोकस करना है. सो ट्रेनिंग इज फोकस्ड ऑन स्किल एक्विजिशन. एज अ ट्रेनर वी वांट जो हमारे लर्नर्स हैं दे शुड एक्वायर अ स्किल, दे शुड लर्न समथिंग न्यू विच दे कैन अप्लाई इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस. ठीक है, इट इज फोकस्ड ऑन स्किल एक्विजिशन थ्रू गाइडेड प्रैक्टिस. बार बार वो प्रैक्टिस करेंगे जो भी स्किल उन्हें सिखाया गया है, सो दे विल लर्न ऑफन रेपिटेटिव टू इंश्योर मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टास्क्स. When they will practice it repeatedly again and again, definitely they will have that mastery of specific task. So herein the focus is on practical real world application. ठीक है, whatever is being imparted, skill is being taught to the learners, trainees we can say, they should be able to apply it in real world situations. ठीक है, so students here practice tasks independently after guidance. जब हम उन्हें एक बार ही गाइड कर दिया then they should practice that task independently. अपने आप से खुद से उसको प्रैक्टिस करें. The trainer demonstrates and supervises. Demonstrates means उन्हें करके दिखाएंगे, supervise करेंगे, offering feedback and correction. So example over here is in a company or we can say a job training session where employees learn to use सॉफ्टवेयर थ्रू स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिस. ठीक है, एक कंपनी है वहाँ पे जॉब ट्रेनिंग का सेशन है वेयर इन एम्प्लॉयज को हमें टीच कराना है, उन्हें सॉफ्टवेयर सिखाना है. ठीक है, सो दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दैट सॉफ्टवेयर विल वर्क. सो एज अ ट्रेनर जो है ना इंस्ट्रक्शन देगा कि
इस टाइप से आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे। तो जो ट्रेनीज हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, दे विल प्रैक्टिस यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर, ठीक है। जब वो प्रैक्टिस करेंगे रेपिटेडली उस टास्क को अगेन एंड अगेन, देन दे विल लर्न दैट स्किल, ठीक है, दे विल एक्वायर दैट स्किल। तो उनकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पीरियड होता है फॉर एग्जाम्पल फॉर 30 डेज और 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग में जो स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ हैं या जो ट्रेनीज हैं, दे एक्वायर दैट स्किल, they acquire that skill, they learn that skill so that they are able to implement that skill when they are actually put in a real life situation on their actual job, ठीक है। I hope these two terms are clear. So there is a difference between the two terms, that is instruction and training. You need to remember this. Next term is conditioning. Conditioning is a process where learning occurs through reinforcement and repetition. Right? It involves behavior modification through reinforcement, means behavior में changes जो आएंगे through reinforcement. It involves shaping a learner's behavior through rewards, that is called as positive reinforcement, or through punishments, negative reinforcement. So the learning, it is focused on habit formation rather than deep understanding. Characteristics of conditioning are, it focuses on stimulus response, ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो कैसे बिहेव करेंगे व्हेन दे आर इनकरेज्ड टू डू समथिंग. द बिहेवियर इज शेप्ड थ्रू reinforcement. Here learner autonomy is low. Learners respond automatically to stimuli. They automatically will respond to a particular, if they are provoked, motivated to do something, they will respond accordingly. That is why learner autonomy is low in this case. Teachers जो हैं, they use rewards or punishments to shape behavior of the learners or students. What a teacher does, he or she will reward the students for completing tasks on time to encourage punctuality, or the teacher can punish also for disruptive behavior. If a student or a learner is creating some trouble in the class, then a teacher can punish the student. This is negative reinforcement. उनकी conditioning हो रही है, ठीक है, they are learning through reinforcement and this helps to shape their behavior. This is conditioning. Now the last term is indoctrination. So herein जो teaching है that imposes specific beliefs or ideologies without encouraging questioning or critical thinking, right? तो यहाँ पे जो teaching है, it focuses on whatever the beliefs are said, that this is the belief, these are the ideologies, you must follow this, without encouraging questioning. Students are not encouraged to do any questioning or any critical thinking. The emphasis on belief acceptance, ठीक है, whatever is being believed, that you should accept. No space for critical thinking or discussion. Obviously, the learner autonomy is very low. Learners passively accept information. So herein, जैसे किसी education system में हम teach करा रहे हैं some political ideologies as fact without allowing students to discussion or any questioning. हम ये कह रहे हैं कि this is the political ideology, यही सोच है, यही belief है, this is a fact, and students, they should accept it. They're not encouraged to any questions or discussions on that. This is indoctrination, ठीक है। यहाँ पे जो learner autonomy है, that is very low. Learners accept passively whatever information is given to them. So these are the 4 modalities of teaching. You should know the differences between these 4 terms, and you can also prepare the previous year questions related to modalities of teaching on page number 200 of this book. Now the next topic is different approaches to teaching and learning. So you need to prepare these 3 terms: pedagogy, andragogy and heutagogy. These are very important. So you must prepare the keywords only. ठीक है? जो detail है, I will provide you in my PDF along with this book, right? So pedagogy basically क्या है? Just learn the keywords. It is an art and science of teaching children. Focus on this keyword, children. बच्चों को जब पढ़ाना है, और डिपेंडेंट लर्नर्स, द टर्म इज पैडागॉगी, द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग. किस तरीके से हमने बच्चों को पढ़ाना है या डिपेंडेंट लर्नर्स को पढ़ाना, दैट इज पैडागॉगी. ठीक है. एंड्रोगॉगी, डिफरेंस भी यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू शुड लर्न ऑल्सो. द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एडल्ट लर्नर्स. ए स्टैंड्स फॉर एंड्रोगॉगी, एडल्ट लर्नर्स. ए स्टैंड्स फॉर एडल्ट. सो एंड्रोगॉगी में मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एडल्ट लर्नर्स, कैसे एडल्ट लर्नर्स को हमने टीच कराना, दैट इज एंड्रोगॉगी. एंड व्हाट इज ह्यूटागॉगी? स्टडी ऑफ self-determined learning.
learners take full control of their learning process. Learners खुद ही जो है अपना learning process जो है उसे control करेंगे. So this is self-determined learning. This is ugcnetcommerce. Very easy. तो इन तीनों terms में जो difference है that you should know. Now it is your choice if you want to learn the proponent's name, that who has given pedagogy, concept of pedagogy, John Dewey and Jean Piaget, right? So यहाँ पे जो learning approach है obviously pedagogy में जो focus है that is on children or dependent learners. So this is teacher centered. ये teacher centered approach है. This is very important for you to remember, where the teacher controls the what. टीचर ने सारा कुछ कंट्रोल करना है, क्या पढ़ाना है, हाउ कैसे पढ़ाना है, एंड व्हेन ऑफ लर्निंग एवरीथिंग. सो दिस इज टीचर सेंटर्ड. एग्जांपल इन दिस केसेस यू नो दैट फ्रॉम केजी टू क्लास 12 क्लासरूम में होता क्या है, देयर टीचर डिलीवर्स अ लेक्चर एंड असाइंस होमवर्क. ठीक है, ये टीचर सेंटर्ड है यहाँ पे सिस्टम. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट लर्नर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट पेडागॉगी. यू मस्ट लर्न ऑल दिस. देन एंड्रोगॉगी में इट इज लर्नर सेंटर्ड, वेयर द लर्नर टेक्स पार्ट इन डिसीजंस अबाउट ए लर्निंग प्रोसेस. अब जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, वहाँ पे जो एडल्ट्स हैं, this training is given to adults and they choose the relevant models which will apply to their work. ठीक है, so वो learner centered है. So the method and practice of teaching adult learners, what is the term is andragogy. ठीक है, ugcnetcommerce पहले भी डिस्कस किया है. इट इज सेल्फ डिटर्मिन्ड लर्निंग. सेल्फ डिटर्मिन्ड है where the learner has full control over the learning process. For example, entrepreneur. Entrepreneur is a person who learns through online resources, networking के through या real world experiences के through without a set curriculum. तो ये क्या है? This is self determined learning. Learner जो है उसका पूरा कंट्रोल है अपने learning process के ऊपर. There is no set curriculum. I hope these three terms are clear to you. So you can also practice previous year questions related to these three terms from page number 203 of this book. Now let us prepare some new terms related to the concept of teaching. So I have taken a latest previous year question from June 2023 examination. This is a new term for you, adaptive teaching. You need to understand this term. The question is the teaching that provides all students with challenging instructions. ठीक है, ये इस टाइप की टीचिंग है जहाँ पे जो एक टीचर है वो अपनी क्लास में डाइवर्स सेट ऑफ स्टूडेंट्स को चैलेंजिंग इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा है as per their appropriate level and uses supports when needed but removes those supports as students become able to handle more on their own is called as adaptive teaching. जो टीचर है वो अडेप्ट कर रहा है सिचुएशन को. फॉर एग्जाम्पल इन अ डाइवर्स सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, सम स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द मैथ प्रॉब्लम्स एंड सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू, राइट. तो जो स्टूडेंट्स नहीं समझ सक रहे हैं उन्हें ये जो टीचर है सपोर्ट देगा इन द फॉर्म ऑफ विजुअल एड्स. ठीक है, या उन्हें कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी हाउ टू डू दोज मैथ प्रॉब्लम्स. विद दैट सपोर्ट दे आर एबल टू टैकल दोज क्वेश्चंस. ठीक है, एंड उसके बाद जो टीचर है उनसे वो जो सपोर्ट उसने असिस्टेंस दी है उनसे वो वापस ले लेंगे सो दैट दे आर एबल टू डू ऑन देयर ओन. इससे क्या होगा, जो सारे स्टूडेंट्स हैं दे आर एबल टू रीच अ एप्रोप्रिएट लेवल. All are able to solve those math problems on their own. So this is adaptive teaching because classroom में होता क्या है, कुछ students को जो questions हैं वो अच्छे से समझ आ रही हैं but there are some set of students जिनको नहीं अच्छे से समझ आते, तो वहाँ पे जो teacher है उनको assist करता है with further support. ठीक है, so when a teacher is doing this, this is called as adaptive teaching. Now after watching this video lecture, I am giving you some homework over here. So all those who have got this book, this new edition, updated edition of my book, so I'm providing all these PDFs absolutely free with this book so that you should prepare paper 1 complete, right? From this book definitely you have to prepare all the latest previous year questions with their detailed explanations very nicely. In chapter 1 you can see teaching aptitude, all PYQs are fully explained. You must go through those all explanations and prepare them thoroughly number of times before your exam, right? Then along with this book I'm providing you chapter 1 introduction to teaching PDF. In this we have covered objectives, characteristics, basic requirements of teaching along with practice questions also, right? So along with this you can watch my lecture 1 also from YouTube, and then chapter 1.1 levels of teaching detailed
All the content is being provided in this PDF along with practice questions and previous year questions also with respect to levels of teaching. With this, you can watch my lecture 2 from YouTube, right? Then chapter 1.2 related to teaching. Related to teaching, this PDF is being provided to you along with this book. जो मैंने आज इस वीडियो लेक्चर 3 में जो डिस्कस किया है, that is all covered in this PDF. And plus, जैसे मैंने अभी जो टर्म डिस्कस की थी अडेप्टिव टीचिंग, देयर आर फ्यू अदर टर्म्स लाइक रेसिप्रोकल टीचिंग, देन रिफ्लेक्टिव टीचिंग, इनकी मैंने डिटेल जो है ना विद देयर कंपैरिजन एवरीथिंग आई हैव प्रोवाइडेड इन दिस पीडीएफ, राइट? सो इन दिस पीडीएफ आई हैव कवर्ड phases of teaching, modalities of teaching, then teaching process, then ट्राइपोलर, क्वाड्रिपोलर, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, एवरीथिंग, ठीक है? सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया लेक्चर 3 में. फेजेस ऑफ टीचिंग, मोडालिटीज ऑफ टीचिंग, एंड देन टर्म्स लाइक पैडागॉगी, एंड्रोगॉगी, ह्यूटागॉगी, and then reflective teaching, adaptive teaching, and reciprocal teaching. All these terms and content is being provided in this free PDF related to teaching, so prepare it very nicely, okay? Then chapter 1.3 related to memory. With respect to this PDF, you have to prepare types of memory, and आपने book में से भी, इस book में से भी types of memory बहुत अच्छे से prepare कर लेना है. It is given in 2023 previous year questions explanations, ठीक है? And then memory models also, memory models को आपने अच्छे से prepare करना है. Then I have got a YouTube video in which I have discussed August-September 2024 examination PYQs related to memory model. You can do that, right? So all those who have got this book, you must prepare June 2023 PYQs related to teaching aptitude. Teaching aptitude के मैंने आपको सारे जो previous year questions थे जो जून 2023 में पूछे गए थे वो मैंने आपको एक जगह एक PDF में explain करे हैं. And जो questions थे related to adaptive teaching, reciprocal teaching, उनकी मैंने detailed explanation दी है. Laws of learning, Gian Piaget theory, most of the questions I've explained them with details also. Then again December 2023 PYQs, Unit 1 teaching aptitude, prepare this free PDF very nicely. जून 2024 में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था उसके एक एक क्वेश्चन को with detailed explanation I have provided in a PDF form along with this book. Then August-September 2024 PYQs, these are very much important previous year questions for you. इसका एक एक question with detailed explanation I have provided in the PDF. सारे जो उसके options हैं उनको भी detail में explain किया है. So you must prepare each and everything, right? So all the best for your preparation. All those who have still not got this book, you can order this book from Amazon. In this book, all important and trending topics of 2023-2024 have been covered. You will get a lot of PDFs along with this book if you get this book from Amazon or Flipkart, and I will give you full guidance for paper 1. So don't you worry at all. So if you are new to my channel, you must subscribe my channel so that you get the notification of my video when it is uploaded. And all those who have got this book updated edition, they should know that I'm going to cover complete paper 1 syllabus through objective questions in this book. इस book में बहुत सारे questions हैं. वहीं से आपकी टॉपिक वाइज जो है ना प्रिपरेशन हो जाती है पेपर 1 के सिलेबस की, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम जून 2014 टू December 2023 examination in this book. There are practice questions also at the end of every chapter. You can see that. Then I'm providing August-September 2024 previous year questions all shifts, ठीक है? सभी shifts के एक जगह sort किए हुए हैं questions. Those are being provided along with this book, ठीक है? जून 2023, December 2023 सभी shifts के questions जो हैं sorted way में, even topic wise with explanations जो हैं I'm providing along with this book. And after that, after you are fully prepared, you will also attempt online test series also, which is provided along with this book. Such is the benefit of this book. You can order this book from Amazon or Flipkart, and I have provided you the link of Amazon in the description box of this video. You can click on that link and place your order. If you want to prepare with me, you can WhatsApp me on my number, that is 97500000491. I will add you to my group of UGC NET Paper 1 preparation. And if you have already bought this book, you can always WhatsApp me on this number that yes, आपने इस book को buy किया है, so that you can avail the benefit of free PDFs of along with this book. Okay, all the best for your preparation. Any query, any
explained out in paper 1, and from where you will get these PDFs, or you want to have any new lecture on teaching aptitude, you can always WhatsApp me on my number or comment on my video below. Thank you so much for watching this video.